types of forces and types of non-contact. Types of forces कंप्लीट हो गया ना? मतलब लिख लिया था डिस्कस नहीं कौन सा डिस्कस किया था? एक भी नहीं किया. ओके. तो कांटेक्ट फोर्सेस में क्या था सबसे पहला? Types of forces. Contact forces. First contact force is force of friction. Frictional force. ये कहाँ पे लगता है? when applying brakes to a car. Yes. So this acts between two surfaces. It acts between the surfaces in contact of body. In a resistive Yes. acting in the opposite direction of देखो अभी समझो ये रोड है और इसके ऊपर तुम कोई वुडन ब्लॉक ऐसे धक्का मार रहे हो. This is the external force that you are applying. ठीक है? ये चलते क्यों नहीं जा रहा है? क्यों रुका? Because friction is acting in the opposite direction. ठीक है? So friction actually acts here. कहाँ पे लग रहा है friction? part in contact. यहाँ पे लग रहा है. ये जो सरफेस है ना, तो अभी देखो फ्रिक्शनल फोर्स का डिस्क्रिप्शन क्या होगा? When there are two surfaces in contact and are in relative motion with each other. ठीक है? Relative motion होना चाहिए. तब हो. So it acts between two surfaces in contact and relative motion with respect to each other. ठीक है? सो दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं होगा. ठीक है? तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ? अभी इसमें फ्रिक्शन लग रहा है क्या कस्टर में? Yes. नो. इज देयर मोशन? No. नो. अभी फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन कब एक्टिव होता है? व्हेन इट बिगिंस टू मूव. अभी तो रुका ही हुआ है, अब फ्रिक्शन नहीं. कब लगेगा? जब स्लाइड कर रहा है. अंडरस्टूड? सो कांटेक्ट क्यों कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में. ये बीच में आ गया डायग्राम. ठीक है? नेक्स्ट. अच्छा, एक चीज और, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट. ओके? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑलवेज एक्ट opposite to the direction of motion. मतलब हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? बॉडी के मोशन को अपोज करेगा या फिर रेजिस्ट करेगा. ठीक है? समझ आ गया? ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स. दूसरा कांटेक्ट फोर्स क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन क्या है? सब देख पा रहे हो? ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा?
नीचे जाता रहेगा, कब तक नीचे जाएगा? सरफेस को टच। तो नीचे क्यों जा रहा है? किसकी वजह से जा रहा है? ग्रेविटी की वजह से। मतलब ग्रेविटी, अब ग्रेविटी लगना बंद हो गया क्या? तो क्यों रुक गया? एक बैरियर आ गया। तो बैरियर क्या कर रहा होगा? अभी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा? जब उस पर फोर्स लगा है। तो अभी इस पे फोर्स लग रहा है क्या? अभी भी लग रहा है। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो इक्वल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो उस फोर्स ने ग्रेविटी को कैंसिल कर दिया या बैलेंस कर दिया। समझ में आया? तो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स क्या है? रिएक्शन। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? रिएक्शन। तो हमेशा अगर ये टेबल, समझो मैंने ये डस्टर रखा है, तो डस्टर को ये रिएक्ट करके रुका पा रहा है, ठीक है? लेकिन अब मैंने इसके ऊपर 300 किलो का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, हो सकता है ये टूट जाए। समझा? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा लग रहा है हैवी ऑब्जेक्ट पे कि इसका जो रिएक्शन है उसको नहीं रुका हुआ है, तोड़ देगा। समझ में? तो रिएक्शन इज द फोर्स exerted by the surface on the body. कहाँ पे? In the normal direction, perpendicular. नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है? तो ये हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। क्यों? क्योंकि वेट कहाँ पे लगता है? नॉर्मली नीचे लगता है, रिएक्शन ऊपर लगेगा। समझ आया? ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। So it is exerted by the surface on any object placed on it. So जैसे अभी ब्लॉक का वेट कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी इसके नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है? ऊपर। ऐसे। This is gravitational force. Force due to gravity. That is weight of the object. फोर्स क्या है? ग्रेविटी का फोर्स क्या है? जो हमारा वेट है। हमको भी हमारा वेट क्यों फील होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। स्पेस में हमको हमारा वेट फील होगा नहीं, क्योंकि वो जीरो ग्रेविटी सिनेरियो। जब हमारे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ही हमारे में वेट आएगा, ठीक है? ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस। किस पे लग रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। थर्ड, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? टेंशन। लिखते जाओ। टेंशन क्या है? The paper apart, then metal there is stress on it. ये देखो, ये जो कैप है इस पे ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, ये नीचे जाएगा, नीचे जाते जा रहा है, अब नीचे नहीं जा रहा है, मतलब इस पे ग्रेविटी लगना बंद हो गया क्या? नहीं, यानी अब इसमें टेंशन आ गया। तो ये जो स्प्रिंग है ना, ये इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, ठीक है? सो इट हैज बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उल्टा हो गया, जैसे नॉर्मल रिएक्शन नीचे से ऊपर लगा रहा था, ये ऊपर से ही ऊपर लगा। व्हाट इज टेंशन?
It is the force. क्या चाहिए? ये अन्य है। और अनन्य आज नहीं आया। अनन्य अनन्य कौन है? सत्तर के साइड में। हाँ? अनन्या वो अच्छा आज वो भी नहीं है और सात्विक भी नहीं है आज। उनका कुछ हुआ है। आज कुछ है स्कूल में। उनका तो टेंशन क्या होता है देखो। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को जैसे कि पेंडुलम था, है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रोप से बांध दिया, अब इसमें क्या लग रहा है? फोर्स तो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। तो अब ये क्यों रुक गया वहां पे? ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन कहाँ पे लग रहा है स्ट्रिंग में? इधर। ये भी एक फोर्स है, ठीक है। So it is the force developed in stretched string or wire or cable. Wire or cable. केबल है ना, केबल केबल केबल। ठीक है। So everything which is hanging from the roof, what is holding the objects? The tension. Like the tension in the pipe is holding this pipe. If the tension was not enough, and will land on your head. Oh yeah. What situation that will be? Okay. So now you have bridges also, and by cables. So the tension in the cable is holding that. That's mentioned. Why contact? Everywhere there is a contact between the applied force and the body. सब जगह contact है. इसके लिए it is called contact. Yes. Any question? Next is spring force. देखो, so ये तुम्हारा है relax. Let us say this is a relaxed spring. We stretch spring को stretch करेंगे तो क्या होगा? कैसा दिखेगा? लेकिन ऐसा दिखेगा 1 2 3 ठीक है। अगर हमने ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया इस पे, ठीक है, इस स्प्रिंग को वी स्ट्रेच इट लाइक दिस, क्या होगा? इसमें अंदर की डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, लगेगा ना? जैसे ही हमने फोर्स हटाया स्प्रिंग वापस ये पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स. It is because of spring force the spring regains its original shape. So उसको spring force या restoring force भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? So ये spring force it is developed in
stretched or compressed springs. ठीक है, देखो अगर हमने कंप्रेस किया स्प्रिंग को, अब क्या हो जाएगा? हमने किधर फोर्स लगाया? इस तरह। ये अप्लाइड फोर्स है, तो स्प्रिंग का फोर्स किधर आएगा? इस डायरेक्शन। हमेशा स्प्रिंग का फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? किसके उल्टे डायरेक्शन में? अप्लाइड फोर्स, ठीक है? So where Fs is spring force, or it is also called as restoring force. ठीक है, restoring क्यों? क्योंकि फिर से ओरिजिनल शेप से क्या हुआ? पूछो, कुछ पढ़ने में दिक्कत आ रही है? वो जो एरो है, हाँ, ये वो एस क्या है? Fs स्प्रिंग फोर्स, Fs वही तो स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो ये तुमने अगर स्प्रिंग बैलेंस यूज किया करते कुछ भी वे करने के, वेट हटा दोगे तो वापस से वो क्या होता है? ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। फोर्थ, फोर्सेस बिटवीन कोलाइडिंग बॉडीज, वो भी कांटेक्ट फोर्स। Colliding bodies or forces during collision। ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ। अभी समझो तुम्हारे पास दो बॉडीज है, okay? It is traveling in this direction। ये ट्रैवल कर रहा है U1 से, ये ट्रैवल कर रहा है U2 से। अब ये कोलाइड हो गया, at the point of collision, ठीक है? So, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। Let us say this is body 1 and this is body 2। तो ये सेकंड बॉडी पे F21 लगेगा और इस पे क्या लगेगा? F12। F21 एंड F, इस पे क्या लग रहा है? F12। इस पे क्या लग रहा है? F21। ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन। समझ आए? कहाँ पे लग रहा है? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो F12 and F12 is force on first body due to second body, and F21 is force on second body due to first body। समझ आए? तो कोलिजन के टाइम पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। F12 किस पे लग रहा है? फर्स्ट बॉडी पे बाय सेकंड बॉडी, और F21 किस पे लग रहा है? सेकंड बॉडी पे बाय फर्स्ट बॉडी। ठीक है, सो F12 and
F1 are forces during collision. कितने टाइम तक एक्ट कर रहा है F21 और F12 T टाइम के लिए, which act during collision time T. जब तक बॉडी टच कर रहा है दूसरे कोलिजन में थोड़े टाइम तो टच करेगा ना, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना वेलोसिटी से जाएगा, ये हो जाएगा v1, ये हो जाएगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी u1 u2 नहीं रहेगा, अभी वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लग गया है ना। तो जिस पे फोर्स किधर लग रहा है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। फर्स्ट बॉडी पे फोर्स किधर लग रहा है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकेंड बॉडी पे किधर लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये वाला फास्ट हो जाएगा, ये वाला स्लो हो जाएगा, समझा। F12 इधर लग रहा है ना, तो पहला वाला बॉडी स्लो हो जाएगा, दूसरा वाला बॉडी फास्ट हो जाएगा, ये एक्सीलरेट करेगा ये वाला, क्योंकि कोई चल रहा है उसको तुमने और धक्का दे दिया तो और फास्ट चलेगा। हाँ हाँ, मतलब फर्स्ट बॉडी विल गेट स्लोअर, सेकंड बॉडी विल गेट फास्टर। तो फोर्स का डायरेक्शन देखो किधर लग, ठीक है। What ideas are ready? It doesn't work in cars because the tires get damaged. It doesn't work in cars. Is it that because the tires get damaged in accident? Yeah, because of the high impact. So it doesn't work in cars. It does work in car. When car collides with another car, both will get damaged. It doesn't become faster. It does, no? If a car hits a bike, what happens to the bike? The bike goes inside the car. Will keep going ahead. Will be tossed. Like a football, okay? You kick a football. Football gets into your leg. What happens to the football? So if the car is little faster than No, if they are coming in opposite direction, then it may happen. What you are saying? so if the motorbike is this way, It's like not running over the bike. You may hit it. So we are talking about collision, and there is a hitting. Like a what do you call it? Snooker table ball, right? What happens? Snooker, billiard ball. They keep hitting each other. Do they get into each other? That's forces you know. Extreme thinking is thinking very extreme. in your case the car should flow is the possible because it's Okay. very Is this understood? easy. All these forces are contact forces. Because everywhere the two bodies are coming in contact. Okay. So 5 places we have understood now. Now, next one. Have you written this down? लिखा है ना सब? Next is, let's discuss non-contact forces. So in this case, these forces act over a distance. They act over a long distance. These forces act over a distance.
Example. What are the example of non-contact forces? Gravitational force. Very familiar forces. Gravitational force. And magnetic. So electrostatic force. And magnetic force. So these forces act over a distance. Where gravitational force act? What is the basis? Why there is gravitational force? Because the Earth is a Mass. mass. Whenever you have two bodies, two objects which has mass, they always attract each other. Okay? So gravitational force is due to the mass of the body. This is force of attraction. Between two bodies due to their masses. Okay, this is the force of attraction between two bodies due to their masses. Body में अगर mass है तो force of gravity नहीं लगेगा, ठीक है? इसलिए अगर कोई हल्का ऑब्जेक्ट है, like a feather, keeps flying, उसके force of gravity उतना effect नहीं दिखा, है ना? So, what about electrostatic force? It is force of attraction or repulsion between charged bodies. Okay, bodies which are charged. यहाँ पे क्या चाहिए था ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए? मास. और ये सिर्फ अट्रैक्टिव होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? It is attractive or repulsive forces between electrically charged bodies. कौन से बॉडीज अट्रैक्ट करेंगे, कौन से रिपेल करेंगे? Like attract करेंगे, like. Like repel and unlike attract. ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा? A metallic body attracts. It is magnetic force of attraction. And repulsion. Magnetic substances. Force of attraction and repulsion between magnetic substances. Okay. Is that clear? So what are magnetic bodies? We need two magnets or magnet and a piece of iron. So here also that like and unlike rule stays. Like poles
repel, unlike force. Now, there is a nature of non-contact force. What is the nature of non-contact force? So, all non-contact forces obey inverse square law. What does this mean? All non-contact forces obey distance. Means these forces decrease when the bodies are far apart. How do they decrease? As square of distance. Okay? Right? So that is, these forces are inversely proportional to d square. Where d is distance of separation. Distance of separation between the bodies. So this happens in all cases. Right? So whether it is gravitational force or electrostatic force or magnetic force, it is obeyed by all three forces. What is the second? Gravitational force is attractive only. But electrostatic and magnetic force are both attractive and ठीक है ये हो गया तुम्हारा नेचर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ये समझ में आया लॉ क्या बोलता है What is this? Magnitude of the force between the two bodies decreases as square of distance of separation. ठीक है? ये हो गया तुम्हारा. So any questions in this?
whatever we have discussed so far. Understood everything? So. Understood? Uh-huh. The force that you applied, that is the external force. Any force applied on the body is external force. देखो ये ठीक है अभी मसल यूज किया ठीक है तो मोमेंटम में बहुत कुछ है gravitational force if you are just dropping it. Yes, but it doesn't fall down. Gravity should have attracted right there. But because of your force it went ahead also. Okay? Because of gravity it is going down, but because of your force it is going ahead. Okay. So are we good till here? So there are no numericals in this part of the topic. Next is Newton's first law of motion and inertia. If you are done writing, we'll go ahead. Everybody has written it? Huh? You're so behind. Huh? That you want to get. So you little also. First completely write it and only Newton's So there are some laws that govern the motion of the body. So there are 3 laws given by Newton. Okay? First law, second law, and third law. Let them finish. तुम लोग कर क्या रहे थे? बाकी सबने लिख लिया तुम लोग लिखे नहीं. Done? So what is first law of motion? It is just a statement of the observed fact. What is the observed fact? The observed fact is if the body is at rest, it remains at rest. Okay? If it is undergoing motion, it remains in motion. Unless some external force acts on it. Okay? Like you have seen, like if the bicycle is at rest, it remains at rest. And when you start pedaling it, okay, when you stop pedaling for a moment, still it remains in motion. That is inertia. Okay. So if the bicycle continues to move despite you have stopped pedaling, okay, so this is an observed phenomenon on a daily basis. उसको statement लिख दिया वही इसको क्या बोल दिया Newton's first law. Yes, you will fall down unless you also run. Right. So what is the first law of motion? It states that body continues to be in a state of rest. Right with me? It states that a body continues to be in a state of rest or in uniform motion
in a straight line until has one L or two L? One. Until an external force Sir, you can until an external force acts on it. Okay, so this is an observed phenomenon. So we introduce the term force here. There is some जब तक force नहीं लगेगा तब तक body का state of motion change नहीं होगा. So underline force. So just think about it. If there was no friction on the road, will the cycle ever stop once set in motion? Yes. What will stop it? There is no air resistance also. Will it ever stop? By crash. So There's air, no resistance, it will die. when it crashes, there is external force. Forces during the wheel. वो तो रुकेगा. Understood? So this is the observed fact. Now the question is why? Why it is so? Why a body at rest remains at rest? Why a body in motion remains in motion? It is due to a property of the body called inertia. Okay? So let us understand what is inertia. So what is inertia then? It is a property called inertia. What is inertia? Property which enables the body to change its state. Enables the body to change its state or opposes the change of state. Inability. So it is the inherent property of every body to remain in its last state of motion or to resist any change in its state of motion. It is the property of the body. Okay? So refers to it is inherent property body to resist or oppose any change in its state of motion. Again, it is inherent property of every body to resist or oppose any change in its state of motion. Now, which criteria? it is inherent property of every body to resist. तो ये एक property जो हर एक object में होता है और ये property what governs inertia? All bodies will they have same inertia? Huh? So the body which has more inertia will have more resistance to change. So which object? What is your experience? Will it be easy for me to change the state of motion of a light object or a heavy object? Light object. So inertia is governed by the mass of the body. Okay, so lighter bodies will have less inertia and heavier bodies will have more inertia, more resistance to change the state of motion.
So mass of the body is measure of inertia. Okay? So inertia of the body depends on its mass, right? Therefore, lighter bodies will have lower inertia or less inertia as compared to heavier bodies. Understood? Lighter bodies will have less inertia. That's why it is easy to change state of motion of the lighter object. ठीक है? बात समझ में आ गई? So if we read the description of inertia, there is no change between this description and this. Isn't it? The description of inertia matches the description of or the statement of first law. Right? That's why it is also called as law of inertia. There is actually, it is just paraphrasing of this, nothing else. That's why it is also called as law of inertia. Okay? Understood? Why do we call Newton's first law as law of inertia? Because both mean one and the same thing. Okay. Now let us discuss some examples of Newton's first law of motion from daily life. Examples of Newton's first law. From daily life experience. First, he likes this topic. So whenever passengers are standing in the bus and the bus moves suddenly, what happens to the passenger? Fall back. They will fall backward. And he like to people to fall and all this. Asra देखो. क्या होगा? Let us say when the bus moves forward suddenly, who is the driver? He is the driver. Sir, that's true. Sir, that has happened. And he is mischievous. So what he did is This has happened in a he accelerated suddenly, and he is through. What happens to window you? to the window? He will fall backward. What if the window is then he fall out of the window? What is the what? No, there's no scope of coming out of the bus. So So what if you will That's jumping it, and yeah. he falls out of the window? Yeah, window is going to break us. Window is open. fall backward.
then fall backward or receive a jerk in the backward direction. Then bus moves forward suddenly. So now you explain why is falling backward. What inertia? Yeah, so what inertia is at work when the bus begins to move suddenly? Inertia of rest. The body was at rest, okay? Now, here the explanation. When the bus moves suddenly, right? So what happens to the floor of the bus? Moves forward. The foot are on the floor. It's not attached. Look, foot. No. Feet are not attached. There is friction. There is friction here. Where is friction? 2 minutes रह गया यार. Friction is between the foot and the floor of the bus. So foot are pulled forward because of friction. But the upper body is flexible. It is not rigid. It's not like a rod. अगर तुम बस में ऐसे rod को hold कर दिया, so this will move ahead. The rod will move ahead with the bus. It will not fall back because it is a rigid body. But human body is not a rigid body. It has liquid muscles. These are flexible. Okay. So the foot goes ahead with the floor. Foot goes. You fall flat like this. Okay. Why? Because of inertia of rest, the upper part of the body tries to remain at rest, whereas the foot goes ahead due to friction. So the inertia of rest, upper body tries to remain in the last state of rest, whereas the foot has suddenly gone forward. इसलिए गिरता हूँ. So एक मिनट लिखो. What is the reason? Due to inertia of rest of the upper part of the body. Write it before leaving. Upper part of the body. While the feet move forward, due to frictional force between the feet and floor of the bus. Okay? This is what. Who is that? Yeah. So these situations are very interesting, but to be able to write it in words and all, you have to practice. Okay, I'll see you in the next one. After human I would say shopping gates of Imagine not inheriting the property of inertia. When you inherit the property of inertia, then you are not human. No, then Malhar is not true. Let me do copy job. You want to do anything?